Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to start our new chapter, that is chapter number 2, biological molecules. So today we are going to discuss its introductory lecture. So let's move to the whiteboard. So dear students, chapter number 2, biological molecules. That is very important chapter regarding board point of view. बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस एमसीक्यूज यहाँ से शामिल किए जाते हैं और एज फार एज मेडिकल एंट्री टेस्ट इज कंसर्न्ड एमटी कैट सो उसमें भी ये टॉपिक्स जो हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर रेलेवेंट दे आर इंक्लूडेड सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड समहाउ इट इज़ ऑल्सो टेक्निकल ये थोड़ा सा टेक्निकल है बिकॉज इट इंक्लूड सम स्ट्रक्चर्स और उन स्ट्रक्चर्स को किस तरह से ड्रॉ करना है किस तरह से उनको किस टेक्निक के ज़रिए आई विल टीच यू इंशाल्लाह और आप उस पर फोकस रखिएगा द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू नीड टू concentrate on the lectures, clear? And you have to note it down on the on your registers. So biological molecules, first of all, there is given a definition that is of biochemistry. So it is the branch of biology that deals with the study of chemical components and chemical processes in living organisms. So आज का जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इस चैप्टर का तो इसमें से शॉर्ट और एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जैसा कि बायोकेमिस्ट्री डिफाइन बायोकेमिस्ट्री सो डियर स्टूडेंट्स the branch of biology that deals with the study of chemical components means the composition and the chemical processes occurring in the living organisms. This is called as biochemistry. यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी कंपोजिशन क्या है और उनके अंदर कौन कौन से केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं फॉर एग्जांपल वी कैन से respiration and photosynthesis. These are the biochemical reactions. Clear? Dear students, now we'll talk about its importance. Of biochemistry is that the basic knowledge of biochemistry is essential to understand the anatomy and physiology and pathology and forensic, etc., etc. So all these medical professions and all these medical subjects, if you want to learn, so you must have the basic knowledge of biochemistry. Clear? For example, the chemical organization
of tissues, we have to study tissues के chemical composition क्या है. आगे चलकर चैप्टर नंबर 4 में भी डिटेल से पढ़ेंगे. तो उसको समझने के लिए बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है. मीन्स दे आर मेड अप ऑफ carbohydrates or proteins or lipids or whatsoever. Clear? Now the components, the chemical components of living organisms. So dear students, there are two kinds of chemical components. Number one are the organic chemicals, and number two are inorganic chemical compounds or chemicals. Clear? Organic, जो most important है regarding the living organisms, they include the lipids, proteins, carbohydrates, DNA, RNA, etc., etc. Clear? As far as the inorganic ions or chemicals are concerned, it includes the metal ions like sodium, potassium, calcium, magnesium, iodine, etc., etc., and some salts and the other salts like chlorine. Now, dear students, I am going to give you percentage chemical composition of two entities, the bacterial and the mammalian cell. Clear? यहाँ पर हमारे बुक के अंदर ये गिवन है. MCQs और शॉर्ट के अतबार से ये अहम है टेबल. तो यहाँ पर हम केमिकल जो कंपोजिशन होती है वो परसेंटेज के हिसाब से डिस्कस करेंगे. So here are the chemical components. In bacterial cell and in mammalian cell. चूँकि bacterial cell means it is a prokaryotic cell, while mammalian cell it is a eukaryotic cell. So that is why these two has been compared with each other. Clear? और dear students, बैक्टीरियल का तो पता ही है, चैप्टर नंबर 6 में भी डिटेल पढ़ेंगे इसकी प्रोकैरियोट्स में. और जहाँ तक मैमेलियन सेल की बात है, मैमेलियन सेल मैमल्स से रिलेटेड है. और कि मैमल्स किन्हें कहा जाता है, चैप्टर नंबर 10 के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे. इन द क्लास मैमेलिया, मैमल्स ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है, ऐसे एनिमल्स जो अपने पैदा होने वाले बच्चों को छाती के दूध से यानी कि ब्रेस्ट मिल्क से फीड करवाएं, उनको कहा जाता है मैमल्स. इट इज़ फ्रॉम मेमरी, ये वाली मेमरी नहीं, मेमरी ग्लैंड, द मिल्क ग्लैंड, द ब्रेस्ट ग्लैंड. तो ऐसे तमाम जानवर जो अपने पैदा होने वाले बच्चे, जो उनकी माएँ हैं, नौमौलूद बच्चों को, पैदा होने वाले बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क पे फीड करें या मेमरी ग्लैंड के मिल्क पे फीड करें, उन्हें कहा जाता है मैमल्स. और उसी से है ये मैमेलियन सेल. नाउ हियर आर द केमिकल कंपोनेंट्स जिसका हम परसेंटेज कंपैरिजन करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1 is water. Number 2, the proteins. Number 3, the carbohydrates. Number 4 are the lipids. Number 5 is
DNA, the deoxyribonucleic acid. Number 6, RNA, the ribonucleic acid. Number 7, the organic molecules like enzymes or hormones. And at number 8, in the last, we will discuss the inorganic ions like potassium, magnesium, sodium, etc., etc. So, what is your percentage? That is the percentage composition. Clear? Remember this thing कि एक सेल के अंदर क्या percentage composition है इनकी. So as far as water is concerned, both have the same amount of water, same percentage composition, that is 70%, and the mammalian cell also 70%. Now the proteins. The bacterial cell contains 15% proteins as per the volume, and as far as mammalian cell is concerned, it is 18%. Clear? 3% more. As far as the carbohydrates are concerned, the bacterial cell has 3% carbohydrates, while the mammalian cell has got 4% carbohydrates in the cell. Lipids, they are 2% in the bacterial cell and 3% they're present in the mammalian cell. The DNA, it is 1% in the bacterial cell and it is 0.25% in the mammalian cell. मतलब कम ज़्यादा की बात नहीं हो रही, सेल के वॉल्यूम के हिसाब से ये परसेंटेज निकाली जा रही है. क्लियर? इसी तरह से RNA, the bacterial cell consists of 6% RNA, while the mammalian cell consists of 1.1% RNA. The organic molecules like enzymes and hormones, so they are concerned, and metabolites, they form the 2%, and in mammals they also form the 2%. And as far as the inorganic ions like magnesium, potassium, calcium, magnesium, and iodine or phosphates or sulfates, they are concerned, so they constitute only 1%, and in mammalian cell also 1%. Clear? तो ये बेसिकली स्टेबल बताया गया है इनके कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से मिलकर के बनते हैं और उनके आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेशन होती है. फॉर सर्वाइवल a living organism takes in chemicals from surroundings and incorporate these chemicals for manufacture of various biological molecules. So these organisms require energy for their life activities, which is gained
by various unseizable biochemical reactions. जब तक वो जानदार जिंदा है, उसको जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए. एनर्जी कहाँ से हासिल करेगा? बाय वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस. और वो केमिकल्स बाहर सराउंडिंग से लिए जाएंगे, उसको बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, डाइजेस्ट किया जाएगा, एक्सेट्रा एब्जॉर्ब किया जाएगा, देन उसको एसिमुलेट किया जाएगा. सो ये सारा प्रोसेस किसके जरिए होगा? बायोकेमिकल रिएक्शंस के जरिए. सो हियर इज अनदर टर्म, दैट इज मेटाबॉलिज्म. सो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? आप पढ़ के आ भी चुके हैं, यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे इसको. द ऑल set of chemical reactions occurring in a living cell or organism is termed as metabolism. And it has got two types. It has got two types. Anabolism or anabolic reactions, and catabolism, which are called as catabolic reactions. Clear? तो ये दो टाइप्स याद रखनी हैं. इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है metabolism. Both these two, anabolism and catabolism, they are collectively known as metabolism. So what is anabolism? In this process, in this type of reaction, the small molecules join to form large and complex molecules. Clear? Means the synthesis. While in case of catabolism, large molecules are broken down into small molecules. It is called as catabolism. जब छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, मतलब कि यहाँ पर सिंथेसाइज होगा बड़ा मॉलिक्यूल, इसको हम ये भी कह सकते हैं द सिंथेसिस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स. That is called as anabolism or anabolic reaction, while the breakdown of large molecules is called catabolism. Clear? So that is the first point, the first difference between them regarding their definition. Now another point is here. In anabolism, energy is utilized, means they are energy requiring reactions, means they are endothermic reactions, while the catabolic reactions, energy is released
means they are exothermic reactions. Clear? ये 2 पॉइंट्स हो गए. तीसरे पॉइंट में आप डियर स्टूडेंट्स इनकी एग्जाम्पल कोट करेंगे. You will put examples. Anabolism की example, dear students, there is the photosynthesis, as far as catabolism is concerned, its example is the cellular respiration. Clear? अब इसकी हम equation भी देंगे साथ ताकि मज़ीद concepts clear हो सकें. In case of photosynthesis, 6 carbon dioxide plus 12 water molecules in the presence of sunlight and chlorophyll, they form C6, H12, O6 plus oxygen plus water. So in this case the energy is required. So ये 2 छोटे molecules हैं, इससे मिलकर बना ग्लूकोज जो कि बड़ा molecule है. That is synthesis of large molecule. This is called as anabolic reaction or anabolism. While in catabolism, here glucose C6, H12, O6, it is oxidized into carbon dioxide plus water plus heat plus ATP, the adenosine triphosphate. तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स एनर्जी रिलीज हो रही है 2 फॉर्म्स में, एक हीट एनर्जी की शक्ल में और दूसरा केमिकल एनर्जी की शक्ल में. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज कैटाबॉलिक रिएक्शन. जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं एक छोटी सी डायग्राम से भी इसका कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगा आपको शेयर करना चाहूँगा. सो दिस इज स्मॉल मॉलिक्यूल plus small molecule plus energy, it will form a large molecule. Clear? So this is the map diagram. This is a conceptual diagram of anabolism. As far as catabolism is concerned, here is a large molecule. It is converted into small molecules plus energy is released. So this is how we can differentiate between them, anabolism and catabolism. So these both collectively are called as metabolism. So all sets of chemical reactions हमारी बॉडी में या तो चीज़ें बन रही होती हैं या फिर टूट रही होती हैं. बड़े पार्टिकल्स टूट कर स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और छोटे पार्टिकल्स ज्वाइन करके बड़े पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं. तो लार्ज मॉलिक्यूल्स के बनने का प्रोसेस सिंथेसिस उनकी कहलाता है एनाबॉलिक रिएक्शन और लार्ज मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन जो या उनकी हाइड्रोलिसिस कहलाता है कैटाबॉलिज्म. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़.